Yes, so 10. Ma'am, all are telling that I remove you. It's okay. Don't mind them, okay? Just do your own thing. No, you don't have to listen to anyone. Okay, so just what we have to be do, we are doing that. What is the answer of the 10 plus 5? I gave the answer by step. For example, you want to do 10 plus 5, then what should you just arrange them first. 10 plus 5. At the ones place, you have to, below the 0, you write down the 5 and 1, there will be a 0. You don't write any of the things and write down the answer is the 15. Next, if you want to add 15 plus 11, what should you do? First, you are writing the 15 plus 11. Then you do the addition 5 and 1. 5 plus 1, 6. 1 plus 1, 2. आंसर इज द 26. मतलब आप उसको पहले अरेंज करोगे, उसको स्टेप बाय स्टेप देखोगे. दिस आर ओनली द 2 डिजिट नंबर, दैट्स व्हाई यू कैन डायरेक्टली आंसर देम. अगर मैंने ज्यादा नंबर्स लिए होते, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द 1000 नंबर, 1000 प्लेस नंबर, देन यू हैव टू अरेंज देम ना. ये 2 प्लेस नंबर थे, 2 डिजिट नंबर थे, तो आपने इजीली मुझे बता दिया कि डायरेक्ट ये आंसर आता है. बट इफ देयर विल बी 1000 numbers, then you have to be arrange them going to the ones place. First you have to do the addition of the ones place, then tens, then 100 and the 1000, right? So these are the way to do the addition. Means you are attending, you are performing the steps. आपने steps को perform किया, then you are going to the answer. So same thing now we are going to learn for the computer, that is name is the algorithm. Algorithm means arrange the problem in the systematic way, in the stepwise way. अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको करना हो, एडिशन करना हो, तो क्या होगा, पहले आप उसको नंबर को अरेंज करोगे, फिर वंस प्लस प्लेस का एडिशन, देन टेंस प्लेस का एडिशन, देन 100 एंड द 1000. मीन्स आपने स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन थिंग करोगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग यू दैट हाउ कैन यू मेक अ लेमन जूस. आप लेमन जूस कैसे बनाते हो? एनीवन कैन गिव मी द आंसर फॉर दैट? Yes. Yes, Yash. Ma'am, first we can take a water. Yes. Then we can put sugar, then salt, Then. Lemon. Then mix it. You have to also tell. Then mix it and it's ready to drink. So simply you can see that you have to be perform the step. आपको पहले ingredients चाहिए, आपको पहले decide करना पड़ेगा कि अगर मुझे lemon juice बनाना है तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा. पहले आपको decide करना पड़ेगा lemon juice बनाना है. Okay, I need a water, I need lemon, I need a sugar, and I need a salt. Right? You decide everything, then you start making it. Take a water, 1 glass of the water, then add the salt, sugar and the lemon and mix it. आपने क्या किया? Step by step किया. For example, if you want to make a sandwich, what should you have to do? अगर आपको सैंडविच बनाना हो तो आप क्या करोगे? Anyone? Any simple sandwich. If you know the answer, just give me the answer. If you want to make a sandwich, सिंपली आपको सैंडविच बनाना हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? Yes. Ma'am. Yes. Then we can cut tomato. Then Other vegetables. Yes. And we have to also. Then take a bread and put on it. And we have to also take a cheese now. Have you forgot the cheese? Yes, ma'am. Cheese is the more favorite of yours ना? सबका फेवरेट होता है चीज. माई ऑल्सो फेवरेट. मेरा भी बहुत फेवरेट है. मैं चीज के बिना खाती नहीं हूँ सैंडविच. Okay, so everyone knows that how to make a thing. अगर आपको स्कूल जाना हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले you walk up, you take a breakfast, then you take a bath and wear your uniform, prepare your school bag, then go to the school bag bus, van or to the vehicle and you came to the school.
मीन्स एवरीथिंग आप अपनी पूरी लाइफ में जो भी करते हो वो स्टेप बाय स्टेप ही करते हो। अभी जैसे कि मैंने बोला कि आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है, तो सबसे पहले आपने वेट किया मेरे मीटिंग आईडी का। यू ओपन योर व्हाट्सएप, you show my meeting id, you just click on the meeting id and joined here if I am allowing। मैंने आपको अलाउ किया तब आप ज्वाइन हुए, आपको क्वेरी होगी तब आप पूछोगे, right? So everything you are doing that will be take by step, so that will be a thing। No need to send messages again and again in this conversations, that will be interrupt me। Okay, so now we are going to learn the algorithm। The name of the chapter number 6 is the algorithm and the flowchart। First we clear the concept of the algorithm, then we go ahead the flowchart। If you know the algorithm, then you are easily understood what is the flowchart। So request to every student, you are not a small kid, so don't annotate on the screen। Why? I don't know why this thing happened in this class only। Why are you like these people? Okay, so now we are going to learn the algorithm। First, what is an algorithm? First, definition of algorithm। Algorithm is simply whatever you are doing, just arrange it in the steps। अगर आपको steps में arrange करते हो तो इसको हम algorithm बोलेंगे। So what is an algorithm? An algorithm is a step-by-step instruction to give the computer to solve the problem। Please quiet and listen। So what this is the definition of an algorithm। An algorithm is a step-by-step instruction give to the computer to solve the problem। Problem means आप कोई work करते हो उसको एक computer की language में हम problem बोलेंगे, और the task you can also say the task। जैसे कि मैंने बोला था कि lemon juice क्या होता है? So lemon juice is a one task that you have to be complete। ऊपर आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे बताया तो वो एक एल्गोरिदम हुआ। आपने मुझे बताया वो है एल्गोरिदम। स्टेप बाय स्टेप आपने मुझे बोला वो, तो वो क्या हुआ? एल्गोरिदम। So there are the ways, logical way and structured way। There are two ways of algorithm। Algorithm provide in the logical way or the structured way to solve the problem of computer। Problem means any task that you have to be perform। आपको जो task perform करना होगा उसको perform करने के लिए। Algorithm can be converted into the programs that the computer can understand and execute to give desired result। What is the meaning of that? Computer जो के हमारी लैंग्वेज डायरेक्टली नहीं समझ पाता, हम बोलेंगे कंप्यूटर थोड़ी समझेगा, उसके लिए भी डिफरेंट लैंग्वेज होती है जिसको हम प्रोग्राम्स बोलेंगे। तो एल्गोरिदम what we have to do with algorithm को हमें प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, और जिसकी वजह से जो हमारा कंप्यूटर होगा हमें डिजायर्ड रिजल्ट दे पाए। एंड यस, वन थिंग आई हैव टू बी इन्फॉर्म यू दैट फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर, थोड़ी टाइम के पहले ही सर ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने ग्रुप में एक डॉक्यूमेंट फाइल भेजी है, दैट इज द HYE portions for your exam। And this chapter will be came for in the exam, so please be careful and listen it carefully। Yes, Ada, what happened? Yes, Yash। आपने जितना टाइम टेबल में डाला है उतना ही आने वाला है। हाँ, वही आएगा। You have to check your standard। ओके मैम वो पूरा पेपर भेजा है ना कंप्यूटर का, वो स्कूल में से आया है। क्या क्या पूछाने वाला है वो मैम? हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ, that is the portion for the exam। Okay, Yes, so now steps to develop an algorithm। Step 1 is describe the problem। Problem means the task that you want to perform। उसको पहले अच्छे से समझो। Please mute yourself again and again, don't unmute it। Second step, analyze the process to solve the problem। First of all, आप problem को समझो कि क्या है।
उसको सॉल्व कैसे करना है, फिर उसकी प्रोसेस को आप सोचोगे। जैसे कि मैंने बोला कि हाउ टू मेक एन लेमन जूस, तो सबसे पहले यश गेव मी द आंसर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही थिंक एवरीथिंग, I have to speak this, I have to use this, I have to be do this. Means first of all to solve the problem, remember revise the everything, अगर मैं ये चीज करूंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, like that. Step 3, develop the main steps for the algorithm. Then you have to write down the everything in the step. For example, अगर हम बोले कि लास्ट प्रीवियस जो चैप्टर था हमारा, उसमें पूरा हमारा स्टेपिंग चैप्टर था, इसलिए मैंने वो चैप्टर आपको ज्यादा लिखवाया भी नहीं है कि अगर आपको पेज ओरिएंटेशन चेंज करना हो तो उसके लिए भी आपने स्टेप्स लिखे थे, अगर आपको पेज प्रिंट निकालनी हो तो उसके लिए भी स्टेप्स आते हैं. Means everything have been step and that you already written in your notebook and also available in your textbook. So everything will be comes in the form of the steps. So that thing you have to do. जो आपने previous चैप्टर में देखा, अभी वो आपको खुद से बनाना है. बुक ने आपको रेडीमेड बना के दे दिया तो आपने इजीली पढ़ भी लिया, देख भी लिया और समझ भी लिया. अब वही चीज आपको परफॉर्म करनी रहेगी. आपको कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है उसको स्टेप्स में. Step 4, add detail of the step for each main step, review and define the algorithm if required. So first of all, first example of, now we are going for the example of the algorithms. First is the a cooking recipe of sandwich. Step 1, that thing already we learned here, I just described the thing. Get the description and details of the sandwich recipe. First of all, you have to be find the recipe of the sandwich, means yummy sandwich. Collect the required ingredients like a cheese, tomato and the bread. If you want to add other vegetables, then you can also do that. Analyze the process. First, the description we get, अगर हमें बनाना है तो क्या क्या ingredients चाहिए. सेकेंड स्टेप में क्या आएगा कि आप कैसे बनाओगे, उसकी प्रोसेस क्या होगी वो चीज बनाने के लिए. फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स, सेकेंड प्रोसेस. एनालाइज द प्रोसेस सच एज ग्रेटिंग द चीज, slicing the tomatoes, buttering the slice, placing the tomatoes and cheese slice on the bread. ये चीज आपको करनी होगी सैंडविच बनाने के लिए. सिंपल सैंडविच एग्जांपल विल बी गिवन हियर. स्टेप 3, develop the main steps, detailed steps of an algorithm. Means cut tomato in the fine slice, grate cheese, toast 2 slices of bread, put cheese on the bread evenly, place the tomato slice on the bread, keep the other bread slice on the top and the sandwich is ready. Means the sandwich will be ready. आपको आप ऐसा जरूरी नहीं है बुक में जो लिखा है, मैंने जो लिखवाया है वही चीज आप लिखो. You can write down in your own language, but in the right way. आप अपनी तरह से लिख सकते हो, but वो एकदम perfect होना चाहिए, right होना चाहिए. It's not necessary that you are writing in your book language or my language. Okay, मैं भी बुक का यूज नहीं करती हूँ ज्यादातर, मैं अपनी ही लैंग्वेज में करती हूँ. तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, आप खुद से सोचोगे तो खुद से इजीली कर पाओगे, क्योंकि फ्लोचार्ट इससे थोड़ा डिफिकल्ट है. So please remember these things. After tasting the sandwich, if you feel that needs more spice or more vegetable, then refine the sandwich by adding required ingredients. After tasting, अगर आपको लगता है कि spices add करनी है, vegetables add करनी है, then you can write down the more steps for that. आप उसके लिए भी ज्यादा steps लिख सकते हो. This is the first example of an algorithm to make a sandwich. Now we are going to learn the example 2, coming back from school. So I want to know from your side first, how can you come back from the school? आप स्कूल से वापस कैसे आते हो? Only Yash gave me the answer. Only Yash gave me the answer. Wait, Yash. Ma'am, can I? Only Krish, Yash, Arav. That people only gave me the answer. Why? What about the other peoples? Ma'am. सोहित आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, इसलिए मैं आपको नहीं पूछ रही हूँ. I know that you raise your hand. Yes, Krish. Finally, you have to be speak. Nobody have raised their hands. Ma'am, first I stepped down from bus
and then came Come back, home. आपको वापिस कैसे आना है? स्कूल में तो हो ही, स्कूल से वापिस आना है. So ma'am, first I will pick up my bag, then go to bus, then sit on seat, sit Yes. on empty seat, Yes. then came home, come नहीं down बस में from से? bus. Yes. Ma'am, वो तो बोल रहा हूँ, come down हाँ, from हाँ. bus, Okay. then go to home, then knock the door, then the door will be opened, then go Okay. inside. That's it. That's it. You reach to the home. That's it. Just we have to be know that how can you reach your home. Okay. Now anyone else? अगर उनके पास कुछ ज्यादा हो, इससे ज्यादा या फिर इससे कम. Remember one thing, एल्गोरिदम में क्या होता है, आपको स्टेप्स कम लिखने हैं लेकिन इफेक्टिव लिखने हैं, जिसकी वजह से पढ़ने वालों को इजीली समझ में आ जाए, स्टेप भी कम दिखे और अच्छे दिखे. यस आरव. Yes, ma'am. I first pack my bag and I put my books inside my bag and compass. Then I reach to the bus. Then I stand or sit in the bus. Sit Then on bus. yes. Then sometimes I talk with my friend in the bus. Then bus reach my home. Then I go down the bus. Then I reach home. यस. ओके, दैट्स इट. मतलब सबकी सेम ही प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं कि किसी को अलग पर्सनली बीच में उतारे वापस ले, ऐसा तो होता नहीं है. एवरीवन हैव अ सेम प्रोसेस टू कम बैक फ्रॉम द स्कूल. So let's take what we'll be writing here. First, wait for a bus in the queue. Second, get into the bus. Third, get down at your bus stop. Fourth, walk down to your house. Simple. No need to write down that I'm talking with my friend or I step up, step down like that. Okay. So these are the way I write down. मैं आपने जो बोला यहाँ पे भी वही डिस्प्ले हो रहा है, but there will be only 4 steps, 4 lines, and that will be, ये पढ़ते ही सामने वाले को समझ में आ गया कि हाँ ये अब स्कूल से घर जा रहा है. That's it. So you have to be write down the algorithm in the simple and the easiest way. आपको जो भी problem दी होगी उसको steps में convert करना है. That's it. That is called the algorithm. Coming back home with your mother. What should you do whenever you come back home with your mother? Ma'am, can I? Yes, Yash. Yes, please unmute yourself. Come back home with your mother. Yes, please unmute yourself. Speak now. Yes. વાપસ આવીએ ત્યારે તમે મમ્મી જોડે આવો. Please mute yourself. If you want to use the Gujarati language, please remove my class from right now. Ma'am, your voice is Then not come back home with your mother, but from school or any. voice is not audible. Yes, I know that there will be some network issue. Please be patient whenever you are attending your virtual class. Where is Yash? Yes, Arav, please speak. Arav, please speak. Ma'am, First I will. Yes, speak. Ma'am, from school or from any place? From school or any place. That is your choice. आप अपनी तरह से बता सकते हो. I want to ma'am, know your first- thinking power. Ma'am, first come home, then wash hands. Coming back home, आपको वापस घर पे आना है, कहीं कोई भी जगह से. For example, you want to come
from school to your home So, ma'am, with your mother. what, ma'am? आपको आपके घर पे आना है स्कूल से आपके मम्मी के साथ, तो आप क्या करोगे, कैसे उसके स्टेप्स लिखोगे? Ma'am, your voice is not audible. How can you come back to your home from the school? आप स्कूल से वापस कैसे आओगे आपके? Ma'am, your voice is not audible. But listen to me now. Why are you continuously speaking? Maybe there will be some network issue. That was. Name is coming. Yes. So again, I'm sharing the screen. Yes. What should you do to come back from home to your mother, from school to your home? आपको आपके मम्मी. Ma'am, can I tell? Yes. Ma'am, first I will pack my bag, then come outside, then sit in the car with mother, and then came home. Okay. Wait for your mother at the entrance of the school. When you see your mother enter the school gate, draw her attention. Pick up your bag and walk out of school gate with your mother. Get into the taxi and tell her driver where you want to go. If it's not necessary that you are writing a taxi or driver, you can also write down that get in the vehicle that my mother came with. आपके मम्मी जिसके vehicle पे आए होंगे आप वो भी लिख सकते हो. It's not necessary that you are writing about the taxi. And no need to write down whenever you are writing own vehicle, guide the taxi driver to your house. Example 3. For your mother at the school. Algorithm to find whenever number is odd or even. So what is the odd number and what is an even number? Ma'am, even are 0, 2, 4, 6, 8 are even numbers, and other are odd numbers. Other are the odd numbers. Very good. In the maths you already know. If you want to find out for any number that how can you find it? आपको जानना है कि ये नंबर odd है कि even है. तो मैम आप कैसे जिस find- नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो नंबर Yes, इवन ma'am. होगा, और जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा वो ऑड होगा. Okay, have you can you tell me the other way to find out? कोई और आपको पता हो कि ये भी अलग वे है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑड है कि इवन? नो मैम, आई डोंट नो. Anyone know? I know one more. Ma'am, someone is recording their meeting. I am recording this meeting. Okay, can you tell me other way to find the number is odd or the even? Ma'am, I don't know other way. Okay, I will give you the answer. So for example, you tell me that if there will be a number 0, 2, 4, 6 and 8, then it's an even number. But have you just think once that 0, 2, 4, 6 and 8 are divided by 2, उसको हम 2 से divide भी कर सकते हैं. Yes, ma'am. Definitely we are dividing that number with 2. And remember one thing, if the division of with 2 of any number comes the remainder 0, then it's an even number. हम कोई भी number को 2 से divide करते हैं और उसका answer 0 आता है, remainder 0 आता है, then that number is an even. अगर Ma'am, remainder not 0, answer.
Reminder. Ma'am, not answer. Reminder. Reminder. I speak that. Okay. So this is the way to find the number is the even or the odd. अगर reminder 0 नहीं आता तो वो odd number है. अगर reminder 0 आता है तो वो even है. Yes, Sarah, what happened? Ma'am, Please unmute yourself. ma'am, if we have the 3-digit or 4-digit number at the ones place of the 3 or 4-digit number, if we will have the 2, 4, 6 and 0. it is divided by 2. Yes, that's the thing that I already told you. If the number is divided by 2 and remainder came to 0, it means it's an even number. अगर रिमाइंडर 0 आता है, कोई भी नंबर की बात करें, ऐसा नहीं कि 2 digit, 3 digit, 4 digit. You can also divide the any number 1000 numbers, 10,000, lakhs. आप कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करो और उसका आंसर अगर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो वो है इवन नंबर. And if the remainder will be not came 0, then that number is the odd. So what we know the step कैसे करना है. Now we are going for the algorithm. उसके लिए हम algorithm कैसे लिखेंगे. Enter the number n. You have to assume the number as n. आप कोई भी लेटर ले सकते हो. मैंने यहाँ पे n रखा है, तो आप अपना लेटर भी लिख सकते हो. It's not necessary that you take assume the number as a n. रीड द नंबर n. उसको रीड करो, पहले कोई नंबर को एंटर करो. दिस फॉर द कंप्यूटर. ये जो एग्जाम्पल, पहले के जो एग्जाम्पल थे वो फिजिकली एग्जाम्पल थे. नाउ दिस इज फॉर द कंप्यूटर. कोई भी नंबर आप एंटर करोगे, उस नंबर को रीड करोगे. चेक द नंबर इज डिवाइजेबल बाय 2. उसको डिवाइड करो 2 से और उस नंबर को चेक करो. इफ यस, देन प्रिंट n is an even number, else print n is the odd number. अगर हाँ तो उसको even number print करो. If no, then print this is an odd number. These are the steps. And last is the exit. It's a compulsory to write an exit and start. Yes, Krish? मैम एग्जिट का मतलब क्या होता है? लास्ट में तो एग्जिट बाहर निकल जाएगा. Okay, listen to me. This is a one type of program, right? Exit का मतलब होता है उस प्रोग्राम से बाहर निकल जाना. And whenever you are writing the algorithm, then you have to compulsory write down the last step will be exit. आपको exit लिखना ही पड़ेगा, उससे 0.5 marks आपके आ जाएंगे. Okay, if you want the 0.5 marks, then compulsory write down the exit. Okay, so now we are going to learn the characteristics of a good algorithm. Each instruction should be clear and have only one meaning. One step should be have only one instruction, or else it may lead to confusions or mistake. Whenever you are writing the algorithm, remember one thing. एक ही स्टेप में एक ही चीज, एक ही इंस्ट्रक्शन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने एक ही स्टेप में सारे इंस्ट्रक्शन लिख दिए, तो वो क्या होगा, पढ़ने वालों को कंफ्यूजन होगा. Each instruction should be performed in the finite time. No instruction should be repeated infinitely. वो कोई भी instruction infinitely repeat नहीं होगा. That is, the algorithm must end. The algorithm must have the end statement after an executing. After the instruction are executed, the user should get the result. जैसे ही instruction खत्म हो गए, users को अपने instruction मिल जाएंगे. Okay, so this is the algorithm. Now it's time to give a task. Do you have a book? Do you have a book? Ma'am, rough notebook. Rough notebook, ma'am. Textbook. Yes, ma'am. Open the page number 78. मैम 75. 78. ओके मैम. यस मैम 78. Okay, there will be a one task is learning by doing. You can see here that will be a one task learning by doing.
you have to be perform the second task and write down the steps. First, मैम इधर whenever नहीं है 78 पे नहीं है है मैम, जब Ma'am, भी it's on 7. Yes. okay, what is your homework? Listen to me carefully. What is your homework? You have to be write down the new chapter. आपको नया chapter start करना है. Write down the heading of the chapter. Then first question is that you have to be write down the example 3 means algorithm to find whether number is the odd or the even. No need to copy these steps. आप अपने steps लिखोगे. आपको book में से step नहीं लिखने हैं. Okay, odd even आपको find करना. It's not necessary that you have to be find out the divisor by 2. जो भी नंबर है उसको डिवाइड बाय. आपने पहले भी बोला कि अगर नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो नंबर इवन है. तो आप वो स्टेप्स लिखोगे टू फाइंड आउट द नंबर इज ऑड और द इवन. मैम फर्स्ट होमवर्क. एक्सक्यूज मी मैम यस एक्सक्यूज मी मैम यस मैम आप ये होमवर्क ग्रुप में सेंड करोगे क्योंकि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. यस आई विल. Yes, Second homework. send करना आवाज नहीं आ रही है. Second homework is learning by doing. That is the write an algorithm to draw a rectangle. आप rectangle कैसे draw करते हो उसके steps आपको लिखने हैं notebook में. Do one thing, just write down the simple steps. आप simple steps लिखो और उसे अच्छे से represent करने का way भी मुझे दिखाओ. And this is the algorithm. We done here the algorithm now. So anybody have a query according to the algorithm? नो मैम